Assalamu alaikum. Welcome from Noor International University, Fatma Memorial, Noor Fatma System, and NIU or Noor Wellbeing Center. हम अपनी सीरीज ऑफ वेबिनार्स में आगे चल रहे हैं. हमने इसमें बहुत से टॉपिक्स पे वेबिनार्स किए सिंस रमजान, एंड वी रियलाइज्ड कि उसमें जहां हम रहते हैं, हमारा प्लेनेट, हमारी अर्थ, हमारी हवा, उसको एड्रेस करके डायरेक्टली फोकस्ड कोई नहीं था सेमिनार, वेबिनार या टॉक. Although we don't have an environmental science department, but our students do study ecology. आज के मेरे साथ co-host हैं Hassan bin Sadar. He is a PhD scholar in environmental science at Punjab University. He teaches there as well in various departments. And right now he's teaching ecology in Noor International University. I welcome you both, Nimra A. Chauhan and Reena Saeed Khan. I'm very thankful that you accepted our invitation. Among your various activities and commitments, और मुझे बहुत ज़्यादा ये खुशी है कि आज हम वाकई ग्लोबल फील कर रहे हैं, क्योंकि निम्रा ने हमें अक्रॉस कॉन्टिनेंट ज्वाइन किया किसी और धरती से जो है इसी प्लेनेट का हिस्सा. आई होप अमेरिकन्स रियलाइज दैट कि वो भी इसी धरती का हिस्सा है. और रीना हमें ज्वाइन कर रही है कैपिटल सिटी से, जहां वो बता रही है कि स्मॉग जो है वो लाहौर की निस्बत बहुत बहुत कम या नॉन एग्जिस्टेंट है. सो फर्स्ट आई आस्क रीना, कुड यू इंट्रोड्यूस योर करंट वर्क एंड बैकग्राउंड, and then we'll move on to Nimra to ask the same thing. Assalamualaikum. Thank you for asking me to participate. It's been a couple of weeks since I got back from the Glasgow summit, which I just attended along with the Pakistani delegation. I wasn't an official member of the delegation. I went on a media badge. So I represented the media there. So I managed to cover it. So if I forget things, forgive me, because I'm also now actually, my main job right now is chair of the Islamabad Wildlife Management Board. So there's a lot of issues with our national park. It's called the Margala Hills National Park. It's inside the capital, ICT, Islamabad Capital Territory. So caught up in a lot of their issues. And it's very difficult to actually, now work with government and to actually become a practitioner. And I've just realized it's so much easier to be a journalist and to sit and report and criticize. And it's so much more difficult to actually get things done on the ground. And now I really feel, sorry for government officials. Now I realize what they have to go through. There's so many different wheels between wheels, and it's not that easy कि you snap your finger. जो हम कहते हैं ना कि government क्यों नहीं ये करी? भी government करने की कोशिश भी करे तो इतने ज़्यादा hurdles हैं कि government is not just one, okay, I'm going off on a tangent, but I just want to say that there are competing interests and vested interests even within government. So, so now that I'm in a leadership role, it's I realize just how difficult it is to get things done on the ground practically. So it's a learning experience. बिल्कुल, I agree. बहुत मुश्किल है. तनकीद करना आसान है, और जब कोई काम कर रहा हो तो उसके हर्डल्स में वहां बैठ के फिर काम के सारे ऑब्स्टिकल्स को एक्चुअली गेट इट डन इज अनदर स्टोरी. इसीलिए हमने भी इसको इनकरेज करते हैं कि लुक एट व्हाट दे आर डूइंग एंड आस्क हाउ कैन वी हेल्प, रादर देन सेइंग कि ये नहीं किया गया. और इसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आज का वेबिनार कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचे, हमारे शहरियों तक पहुंचे. So Nimra, what are you currently placed with, and a little bit of background about your training and education in this field? Sure. So, Assalamu alaikum, everyone. My name is Nimra Chauhan, and I'm an environmental scientist and policy expert, and also an activist. And my interest in the environment started in my teens when I volunteered with the WWF, and I developed a love of nature, and through hiking and exploring Pakistan's, various northern areas,
And so since then, I've worked with WWF, the World Bank, IUCN, and various energy think tanks. And I'm also the founder of Pakistan Sustainability Network, which is a youth-based organization, a volunteer organization that seeks to bring young people's perspective into the policy-making processes in Pakistan. And I have represented Pakistan at various UN conferences and at the World Economic Forum. I was also a youth delegate to COP21, where the Paris Agreement was signed. And I'm currently studying for a master's in global energy and climate policy at SOAS, University of London. I loved working with the young people who are involved in climate change and empowering the next generation. So yeah, that's a little background on me. Good, thank you. So Reena, when did you have start this passion? I can see the elephant in the background, jo aapki picture bhi hamare paas aayi. And I feel all children love nature, but then we probably push them in other directions. Yeah, so where did your journey? I started actually quite a while ago. I think in the 1990s, I came back from college, and it was a liberal arts college in the United States, a small liberal arts college. So I was a journalist, and so I was reporting, and I got invited by the UNDP, United Nations Development Program, to visit. They said, would you like to travel? And I said, sure. And, for me, traveling would be Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar. But they said, this is a little bit out into the sort of like the interior of Sindh, to a place called the Sakhar Barrage, near Sakhar, where there's an Indus Dolphin reserve. So I'd heard about the Indus Dolphins. They're blind. They've adapted to the muddy waters of the River Indus for thousands of years of evolution. So I thought, why not? It sounds like an interesting story, and they were going to arrange all my travel and my stay. And so I agreed. And I think, in fact, it was the WWF. I was going to go with the WWF team, World Wildlife Fund, which Nimra has also worked for. And so I went along, and it was such an amazing experience to see the Indus dolphins in the water. We took a boat out on the river. It was very foggy that day, not smoggy, but foggy. And then, we heard the cries of the dolphin, and then we actually saw them jumping out of the water. It was really magical. And I was so amazed when I read the history about, when I read the background about the dolphins, and how there were only almost like 1,200 of them left when I visited. And this is just a rough survey that WWF had done. And then I read about, then I heard about the Indus Dolphin Rescue Unit, how they rescue the dolphins because they get stranded in the barrages in winter. When the water level goes down, they get stranded, and then, they drown, or because they're mammals, they come up for air, and the fishing nets drown them, or they just run out of water and they die. So then they would physically pick them up and then take them back to the river on a stretcher and release them. So all this I managed to do. I follow one of the rescues, and it was just really magical and inspiring and amazing. And so I did a story on it, and I used to write for the Friday Times at that time. And people really appreciate the story. And then I got more and more interested in the UNDP. There's a lady who worked with the UNDP at the time, Majmeen, and she sort of became my mentor. And so she said, would you like to go on more visits? Would you like to see other species like the Suleiman Markhor, like the snow leopard? Well, you can't really see the snow leopard, but, would you like to go up north? And we have other flying squirrel and so many really, really interesting endangered species in Pakistan. And she said, if you are willing to go, we can arrange your visits. And so I just embarked on this journey. I think it was just by chance, honestly. It wasn't planned at all. It was completely unplanned, and I just got into it, and then doors just started opening. And then WWF said, would you like to visit more of our projects? And I said, sure. So they would arrange the visits. And this is, I mean, for a woman to go alone to these areas, even today, I wouldn't really encourage it. But I think, of course, the north of Pakistan is much, much more easier to now visit, and there are lots of tourism. But in those days, I think I'm very grateful that UNDP, WWF really opened their doors and took me and, and gave me that opportunity to really
travel across the country. And in fact, I ended up writing a book on my travels, Mountains to Mangroves, later on. So that was published by Oxford University Press. And so I really got to see a lot of Pakistan, a lot of remote areas, and actually met the communities as well, because they're very important. The involvement of the local communities is crucial to saving these species, because they're the ones who are there on the ground to protect these species. And every project would try to involve the local communities. So it was really fascinating to visit. And then I just got more and more into it. And then Nimra, I also went to SOAS, by the way. So I got a Shievening scholarship because of my interest, and I hadn't done my master's as yet. So then I just went into a totally different subject, which was at the time it was under the geography department, because you didn't really have a climate change or a climate sort of section at the time. So I studied environment and development at SOAS, and I got my master's from there, like Nimra is studying, and was under Shievening scholarship. So yeah. And then I came back, and then I started a little bit I was still doing my reporting, but I started doing consultancies for the UNDP. So more like development work or more environmental work, I would say. Excellent, thank you. Nimra has listed some questions that you and Nimra will be holding a discussion on. And I have just one question in the end about taking this forward into action for everybody. So they know what is the right action, responsible citizen looking at environment would be. So वो हम admit करेंगे, and if Hassan would have any questions during that, so he can. So Nimra, over to you for the things you wanted to ask. Sure. I'll just introduce to the audience about some of the, basic concepts in climate change that are important to know before I dive into that into COP26 and all of that. So a lot of people may have heard of the Paris Agreement, which is a piece of international legislation, international law that came into effect in 2015, was finalized in 2015 and then ratified the year later after that. So that agreement was facilitated by the United Nations, and it is under a secretariat of the United Nations called the UNFCCC, which stands for the United Nations Framework Convention for Climate Change. So those are just some technical things I wanted to get out of the way in case, both of us mention that, just so you know what that is. And all of the countries in the world that are active within the UN and have signed on as members of the UNFCCC are considered, for the most part, also signatories to the Paris Agreement. So that's also something that you could people watching this could research in their own time as well. Now, climate change itself is a global change that I think a lot of people have been observing. A lot of even indigenous communities have been observing. I did some research in Sindh about 10 years ago, in which a lot of communities were telling us that they had been experiencing, especially those that are reliant on natural resource livelihoods, were telling us that they are experiencing the disappearance of various species because of rainfall patterns changing and all of those kind of changes. So I think it is not just a scientific consensus, but also a sociological consensus at this point. Whether you understand the science of it or not, I think an average person has noticed certain weather patterns changing, as well as some of the weather events and extreme weather events that we are experiencing in the world right now, everywhere from Canada all the way to Bangladesh. So, but technically climate change refers to a change in global or regional climate patterns. And in particular, this change began from the mid to the late 20th century onwards. And it's largely attributed to human actions, and that's what we call anthropological climate change, that it is caused by industrialization. And so at this point, with the Paris Agreement, the point of the Paris Agreement is to keep the levels, the warming levels of the world below 1.5 C above pre-industrial levels. So whatever the levels were at the time of the industrial
revolution, they should be kept within 1.5 increase of that. So let me just review my questions for Aina. तो निम्रा, इसको अगर हम आसान मतलब उर्दू में भी करें और आम फहम जबान में भी करें, मौसम और माहौलियात जो है उसमें जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, जैसे कि हमारे टाइटल में है और हमें नजर भी आ रहा है, और वो इस हद तक पहुंच गया है कि कॉमन लोग जो है, आम लोग भी अपनी जिंदगी गुजारते हुए ये सोचते हैं कि ये हो रहा है, सबको इफेक्ट कर रहा है, हर जगह कर रहा है। तो अगर स्मॉग हो रही है, उसके पीछे भी कुछ ऐसी चीजें जो हम सालों से कर रहे हैं। अगर बारिश के पैटर्न बदल गए हैं, अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी पहले यूं सर्दी आती थी और पहले इस तरह से गर्मियों में होता था, बरसात का ये टाइम था। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आग लगी हुई है कैलिफोर्निया के जंगलों में, और जहां ग्लेशियर 8 थे नारान में, उनमें से 4 गायब हो चुके हैं। और मैं सिर्फ नारान की बात कर रही हूँ, what other global warming is happening elsewhere, दुनिया में कहीं और जो माहौल गर्म हो रहा है, उससे जो नुकसान हो रहा है। इसके पीछे ये कि हम जो कुछ करते रहते हैं अपने इस घर के साथ, जो हमारी धरती है, हमारी जमीन है, उसमें हमने ये नहीं सोचा था कि हम मौसम पे भी असरअंदाज हो सकते हैं। वो कोई मैजिकल सी बात लगती है कि हमारे कुछ करने से बारिश, बादल, पानी, मछलियां, परिंदे, जंगल, आग, दरिया, ये हम क्या करते हैं? हम तो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ये सब तो नेट फितरत का फिनोमेना है, अल्लाह ताला ने चीजें बनाई हुई हैं, वो अपने हिसाब से सूरज निकलता है। हम अगर सूरज को भी छेड़ सकते तो शायद छेड़ लेते कि वो दो और किसी और वक्त निकले या कुछ, क्योंकि वो और कानून के तहत है। लेकिन हमारे एक्शंस के ये नतीजा निकलेगा, तो वो एक तो हम कौन सी हरकतें करते रहे हैं जिनका ये नतीजा निकल रहा है, और इसमें बहुत टाइम पीरियड लगता है जाहिर है ये होने में। हम अगर आज दरियाओं को पोल्यूट कर रहे हैं तो हमें सालों बाद इसका मिलेगा। तो मौसम पे तो और भी देर लगती होगी, वो कोई एकदम से ये हमारा घर इस तरह, हमारी जमीन, हमारी धरती, हमारा मौसम ऐसे नहीं हो गया। तो ये मैंने आपकी बात का शायद जिस्ट थोड़ा सा करना चाह रही थी। अभी कितनी, आपने कहा कि वार्निंग लेवल्स जो है लो 1.5 सी रखने थे, ये क्लाइमेट के हवाले से आप बता रहे हो? जी बिल्कुल, ये पेरिस एग्रीमेंट के ओवरऑल जो गोल है वो यही है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस सदी के शुरू में यूरोप में शुरू हुई, उस वक्त जो लेवल्स थे उससे 1.5 ज़्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर वो 2 सी तक चले गए, अबव दैट एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो एवरेज थी उस वक्त दुनिया में, so it would cause catastrophic climate change, या ऐसी climate change जो जिसको हम रिवर्स करना या उसके इफेक्ट्स को में तब्दीली लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। so जब हम कहते हैं कि हम माहौलियाती तब्दीली पे हमारा असर हो रहा है, वो हमारी सनती और माशी जो एक्टिविटीज़ हैं इंसानों की, उसकी वजह से फैक्ट्रीज से जो इमिशंस निकलती हैं, गाड़ियों से जो CO2, मीथेन, इस तरह की क्लाइमेट कॉजिंग जो गैसेस होती हैं वो निकलती हैं। दरख्त काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से भी इस पे बहुत असर हो रहा है। दरख्त इसलिए काटे जाते हैं ताकि वहाँ पे फार्म्स लग सकें, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए घर बन सकें। दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। so इस वजह से इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से माहौलियाती तब्दीली जो है हमें नज़र आती है। और अभी एक जो दुनिया के सारे साइंटिस्ट हैं जो इसमें स्पेशलाइज करते हैं, उनका कंसेंसस है, उनका इजमा है इस पे कि जो माहौलियाती तब्दीली है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो सनती एक्टिविटीज़ हुई, जो हिस्ट्री है स्पेशली वेस्टर्न और यूरोपियन ममालिक की, उन्होंने बहुत जल्दी से इंडस्ट्रियलाइज की अपनी सोसाइटी, तो उसकी वजह से जो है माहौल बदलना शुरू हो गया। सो आई होप दैट मेक्स सेंस। जी बिल्कुल, इसलिए भी बात समझनी कि वो हमने एक या दो लोगों ने नहीं किया, एक या दो मुल्कों ने नहीं किया, एक या दो शहरों ने नहीं किया, पूरी दुनिया
ने किया है, और अगर कुछ लोगों ने ये किया है तो क्या ऐसा है कि ये कुछ लिमिटेड नेशंस के, सोसाइटीज के, इंडस्ट्रियलाइज्ड या एडवांस टेक्नोलॉजिकल जो सोसाइटीज हैं उनका किया धर है, और इसकी कीमत पूरी इंसानियत को ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस की शक्ल में देनी पड़ रही है? नतीजा तो सभी भुगतेंगे ना फिर उसका। हमारे मुल्क में क्या ये बात सही है कि ये सब, मतलब भूटान ने शायद कम किया हो, स्कर्दू ने शायद अपना हिस्सा इसमें कम डाला हो, ना वेस्ट में और ना, आपसे एग्री कर रहे हैं सर? I totally agree with this. बस मैं चाहूंगा निम्रा इसमें आप अगर शेयर करना चाहें, because you are sitting in US, and how does the US itself sees the role, because global climate change जो है या global warming itself और जितने भी global issues हैं इनको कॉज करने वाले भी तो वेस्ट है। यूरोप ने और यूएस ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की और इन्होंने ही सारी पोल्यूशन की और इन्होंने ही क्लाइमेट चेंज किया। दे डिसरप्टेड द बैलेंस। सो डू दे फील देमसेल्व्स कल्प्रिट, or what are they doing? Does they feel that they have basically done this damage to the planet Earth or Mother Nature? जी, सो जो इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी में ये चीज़ें काफ़ी ये इसको रिकग्नाइज किया जाता है और इसको भी, इस चीज़ को भी अहमियत दी जाती है कि जो वेस्टर्न या यूरोपियन ममालिक हैं या इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, उन्होंने तकरीबन 50-60 इयर्स के अरसे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एमिशंस की और क्लाइमेट ऑलरेडी उस वक्त बदलना शुरू हो गया था। तो अब ये जब चाइना या पाकिस्तान या इंडिया या सऊदी अरेबिया, जो डेवलपिंग ममालिक हैं जो अब डेवलप कर रहे हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन इतनी फेयर नहीं है कि हम अपनी डेवलपमेंट को कम्प्लीटली पॉज कर दें क्लाइमेट चेंज की वजह से। और तो ये राइट टू डेवलप का भी इशू आता है। काफ़ी ये डीप सब्जेक्ट है, तो हम आज इतनी उसमें नहीं जा सकते, मगर ये है कि इस चीज़ को रिकग्नाइज किया जाता है और इसमें फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है। मगर ये काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं यूएन के लेवल पे। और अब ये कॉन्वर्सेशन भी है पेरिस जब से साइन हुआ कि जो डैमेज, क्योंकि जिन ममालिक ने या जिन नेशंस की वजह से क्लाइमेट चेंज ज़्यादा who have contributed more to climate change are least affected, and the ones that have contributed almost nothing are most affected. जैसे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लो लाइंग आइलैंड्स, उन्होंने, जो बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज नेशंस नहीं हैं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज की तरफ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की, उन्होंने वो एमिशंस जनरेट नहीं की, मगर इसके बावजूद सज़ा उनको मिल रही है क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि ज़्यादातर इफेक्ट्स जो जब क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल ऊपर चला जाता है, तो अभी ऑलरेडी काफ़ी सारे आइलैंड्स जो हैं दे आर ऑलरेडी अफेक्टेड, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ for those low-lying islands. It's not just an intellectual subject, it is literally a matter of life and death for them. So ये inequality जो है इसको recognize किया जाता है, और ये एक there is a concerted effort कि ये ममालिक जो हैं जो compensate करें उनके citizens को और उन मुल्कों को जो सबसे ज़्यादा affected हैं। And I think हर मुल्क की अपनी reality, अपनी geography, अपना climate होता है, तो उसके हिसाब से impacts भी उसके हिसाब से ही हम देखते हैं। ठीक, अरीना आप अगर ऐड करना चाहें, बिकॉज आप लिखती रही हैं बहुत रेगुलरली, और आई हैव बीन रीडिंग मैनी ऑफ योर कॉलम्स इन द न्यूज़पेपर दैट यू यूज्ड टू राइट विद अर्थी मैटर्स के नाम से जो आपका था उसमें। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने भी कई दफा क्रिटिसाइज किया होगा, और जब आपने एनवायरनमेंट की बात की तो किस किस्म का क्रिटिसिज्म आपको मिला, या किस किस्म का मतलब जो आप लिखती हैं या जब आप बात करती हैं एडवोकेसी, स्पेशली जब आप कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट की, तो आपको भी तो काफी जो है वो नेगेटिव रिमार्क्स और क्रिटिसिज्म सुनने को मिलती होगी। तो इफ यू कैन शेयर विद पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव कि जब आपने लिखी है या बात की है इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से या कुछ भी, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? Now, I would say कि I mean criticism तो I mean it really, it's such a
कोई स्पेसिफिक मैं आपको एग्जांपल्स अगर दूं तो I mean first of all मैं बस just wanted to add to Nimra's before I go into the criticism part के जो जरूरी बात है समझने के लिए in very simple अल्फाज के अगर 1.5 हमें साइंटिस्ट ने कहा है कि ये हमारा गार्ड रेल है कि इससे अबव हम जा नहीं सकते, तो ये हमें सोचना चाहिए और ये बिल्कुल आई थिंक समझना चाहिए कि हम राइट नाउ 1.1 वार्मिंग तक पहुंच चुके हैं, तो टाइम बहुत कम है। जो खिड़की है वो बंद हो रही है, जो कह रही है ना साइंटिस्ट के अगर आपने एक्शन करना है, और जो साइंटिस्ट तो काफी देर से कह रहे हैं कि एक्शन करें, तो उन्होंने तो अपना बल्कि जो उन्होंने प्रोजेक्शंस दी थी या जो उन्होंने बातें की थी 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, वो तो सामने वो ही वाजे हो रही हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही प्रेडिक्शंस की थी। तो वो अब कह रहे हैं कि इसकी जो खिड़की है टाइम, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये 20 अभी हम 2021 पर हैं कि 2021 से लेकर 2030 ये हमारा क्रूशल डेकेड है पूरी हमारी दुनिया के लिए, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान और अदर डेवलपिंग कंट्रीज, बट पूरी दुनिया के लिए क्रूशल टाइम है कि अगर आपने कुछ करना है, मिशंस अपनी काटनी है और इस 1.5 तक आपने कैप करना है, मीनिंग इससे ऊपर आपने नहीं जाना, which will save countries like Barbados and हमारे जो छोटे मुल्क हैं जो बहुत बहुत अपसेट हैं, मार्शल आइलैंड्स एंड सोलोमन आइलैंड्स, और वो कॉप में आते हैं, वो बल्कि बहुत जाहिर बहुत उनके स्ट्रॉन्ग डेलीगेशंस होती हैं और वो बहुत जोश से वो नेगोशिएशंस में दाखिल वो करते हैं, शामिल होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि देखें हमारी तो सर्वाइवल की बात है, आप लोग तो अपनी ठीक है बातें कर रहे हैं, हम तो बचेंगे नहीं, हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन, मीनिंग हमारे जो आइलैंड्स का अपना कल्चर, दे वेरी प्राउड ऑफ दैट कल्चर, वो तो खत्म हो जाएगा। चलिए लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, क्लाइमेट माइग्रेशन होती है, मगर उनकी वे ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगी। एंड इवन मालदीव्स एक्चुअली व्हिच इज वेरी क्लोज टू अस एज वेल। सो तो ये वी हैव टू रिमेंबर कि 1.1 तक हम पहुंच चुके हैं, तो टाइम बहुत कम है। 1.1 से 1.5 इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम, और ये 10 साल है। अब ये 10 साल में हमने क्या करना है? आई मीन क्रिटिसिज्म के अलावा, मैं तो कहती हूँ जो जितना ज्यादा बंदा लिखे तो कम नहीं है, और हम अपनी गवर्नमेंट को अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं कर सकते, बिकॉज ये मैं बार बार क्लाइमेट एक्टिविस्ट को बताती हूँ, स्मॉग इज अ हॉरिबल इशू। आई एम फ्रॉम लाहौर, मुझे भी बहुत दिल को लगता है, बट इट्स अ लोकल इमिशंस इशू। तो जो ग्लोबल इमिशंस की हम बात करेंगे, कल पाकिस्तान ने सारी गाड़ियां बंद कर देते हैं और हम कोल पावर प्लांट्स जो हमारे थोड़े से हैं 3-4 वो भी बंद कर दें, और हम बिल्कुल फॉसिल फ्यूल्स को खत्म कर दें, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे ग्लेशियर्स फिर भी मेल्ट होते जाएंगे, बिकॉज हमारे इमिशंस ग्लोबली इज लाइक 1%, इट्स नॉट अ लॉट, वी आर नॉट अ हाई कंट्रीब्यूटर। तो इसलिए हमारा भी रोल कॉप्स में इतना लिमिटेड होता है, बिकॉज हम कोई बिग प्लेयर नहीं है, वे नॉट ब्राजील और इंडिया विद बिग इमिशंस हु आर बिग प्लेयर्स, बिकॉज हमारी इन्फ्लुएंस इतनी नहीं है। मगर फिर भी हम एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट हम जाते हैं, हम शामिल होते हैं, हम फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने ये 10 बिलियन ट्री सुनामी अपने मदद से शुरू कर दिया है, विदाउट आई मीन अब वी आर गोइंग टू गेट सम फंडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड ऑल, बट अपनी मदद से हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, वो ही इज एन एनवायरमेंटलिस्ट एट हार्ट, तो उसने कहा कि नहीं मैंने कुछ करना है अपने मुल्क के लिए। तो ये है कि हम वी आर नॉट अ बिग पोल्यूटर एंड वी आर नॉट, जो बड़े पोल्यूटर्स हैं वो उनके इकट्ठे अगर आप इमिटर्स के जो गिन लें तो इट कम्स टू ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द इमिशंस on the planet. And then you have big corporations like Shell, like BP, like Exxon. I mean, they are the ones who are actually responsible, and they are multinationals. They are present in every country and they're very powerful. They have a lot of money. And unfortunately, अब जो हम जिस सूरत हाल पर पहुंचे हैं, दैट्स बिकॉज इतने सालों से देयर वाज आल्सो क्लाइमेट डिनायल। आई मीन कि नई एमिशंस नहीं, पता नहीं हो रही है, क्लाइमेट चेंज नहीं हो रही, बिकॉज देयर वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी जो मीडिया को भी कंट्रोल करती थी। आई मीन आई फॉर्चुनेटली हैव बीन अ फ्रीलांसर, तो मेरे ऊपर कोई ऐसा कोई पाबंदियां नहीं थी, बट lots of journalists and working for regular newspapers. So newspaper owners का एक अपना policy था, because they were influenced by the fossil fuel lobby. कवर अप भी था, डिनायल भी था। अच्छा, आप दूसरी साइड दें, कहते हैं ना मीडिया में, तो व्हेन यू राइट अ स्टोरी यू मस्ट ऑलवेज गिव बोथ साइड्स। आई मीन व्हाट अदर साइड वाज देयर? आई मीन यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट, बट देन दे वर सेइंग दूसरी साइड भी आप दें। तो अब शुक्र है मीडिया ने भी अब एक
for example, The Guardian last year declared a climate emergency, and they said कि अब हम वो soft अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे. We will call it for what it is, that we are actually destroying the planet and we are in an emergency right now. जो बच्चे हैं जो हमसे young, निम्रा से भी young, जो छोटे बच्चे हैं वो जो सड़कों पर you know फिर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि हमारा क्या फ्यूचर है, व्हाट काइंड ऑफ प्लैनेट आर वी गोइंग टू ग्रो अप इन. जो उनकी लीडर है ग्रेटा थर्नबर्ग, वो आई हुई थी इस कॉप पर भी. आई सॉ हर लास्ट कॉप पर भी. शी वाज, आई मीन, व्हिच वाज इन मैड्रिड 2 years ago. तो वो भी यही बच्चों को इंस्पायर करके यही कहती है. और बाय द वे उसको जो इन्फॉर्म करते हैं वो टॉप क्लाइमेट साइंटिस्ट है, वो खुद तंग आ गए हैं बिकॉज गवर्नमेंट्स डोंट लिसन, कॉर्पोरेशंस डोंट लिसन. तो वो तंग आके दे फाउंड दिस वेरी वेरी इंटेलिजेंट यंग, जो थोड़ा बहुत उसके भी खिलाफ लोग कहते हैं कि वो स्वीडन की है, तो शी इज फ्रॉम द ग्लोबल नॉर्थ, शी इज नॉट फ्रॉम द ग्लोबल साउथ. तो इस साल मैंने देखा था कि वो उसने बहुत, शी स्टेप्ड बैक और उसने प्लेटफॉर्म अपना यूज किया था, एंड शी लेट द इंडिजिनस यूथ एंड देन यूथ फ्रॉम अफ्रीका, स्पेशली एक यंग लड़की है वो जो युगांडा से अब आगे आ रही है. तो उस बेचारी ने खुद यू नो पीछे हट गई. उसने कहा ये जो यंग लोग हैं पूरी जो अफेक्टेड कंट्रीज से, स्वीडन इज नॉट एज अफेक्टेड एज फॉर एग्जांपल युगांडा, तो उनको वो अपना फेम यूज करके शी वाज रियली प्रमोटिंग देम कि ये बोलेंगे मैं. और वो बिल्कुल एंड में बोलती थी और थोड़ी देर के लिए बोलती थी, मगर लोग आते थे उसकी सेलिब्रिटी यू नो स्टेटस देखने के लिए. ग्लासगो में व्हेन आई वाज मार्चिंग तो इतने यंग यंग बच्चे थे स्कॉटिश, तो वो यही कह रहे थे वेयर इज ग्रेटा, वेयर इज ग्रेटा, यू नो. तो एक एक सेलिब्रिटी का आपका यू नो द वर्ल्ड इज लाइक अ सेलिब्रिटी कल्चर has become such a powerful tool as a way, you know. तो वो चलो अपनी, शी इज यूजिंग her celebrity status for you know a very important and cause. So I think तो ये है कि अब यही बच्चे यही कह रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा क्या फ्यूचर है, यू नो. हम why should we even get married and have children, and और हम क्या why क्या हम बच्चे भी है नहीं, I mean, you know. So they're very angry and I think honestly जो मैंने कॉप में देखा जो negotiations थी, and I'm sure Nimra has lots of questions, but जो इतना जो incremental कहते हैं ना कि नहीं बस थोड़ा सा प्रोग्रेस हो गया, अब इंशाल्लाह अगले साल मिलेंगे, फिर थोड़ा सा और बच्चे कह रहे हैं कि आप वो उस टाइम वो टाइम खत्म हो गया. 10 साल साइंटिस्ट कह रहे हैं अब आपने करना है तो करो, you know, fossil fuels को खत्म करो. And we have alternative energies, we have renewable energy, we have alternative solutions, I should say, but they're expensive, of course, and they're not easy. And I mean, हम सुबह उठते हैं तो हम like हमारा power comes from a power plant that's run on thermal energy or it's run on coal power plant, right? I mean, our whole way of life is totally fossil fuel dependent. हम गाड़ी में बैठते हैं. How many of us have electric cars? We're running a fossil fuel petrol use करते हैं. हमारे जो ज़्यादा product कुर्सियाँ हैं वो प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं, which is, you know, a byproduct of petroleum. I mean, everything, our whole way of life is so centered around fossil fuels. How many of us actually go off and live in the nature and live, you know, in sort of homes that are zero, you know, emissions and sort of ecologically friendly? Bahut kam na, we don't. I mean, so it means changing our whole way of life. But the youth are saying it's possible. It has, I mean, we have no choice. We have to do it. But अब mainstream लोगों को किस तरह समझाना? तो ये हम लोग जाते हैं, like as the delegation का stance very simple, कि we are not a high contributor, but we are a responsible state. And so we go, we participate. And smog ka, we can discuss the smog later if you like. I mean, it comes under local emissions. It's a terrible, terrible problem. And it's a problem we have created. You know, and we created this. I think 10-15 साल से लोग रो रहे थे जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी कि दरख्त ना काटें, ये सिग्नल फ्री, you know, हाईवेज, और जो you know, जो आपने जो एक्सपेंशन देखी है इवन ऑन द कनाल, वो इतने दरख्त थे वहां पर, उनको अंडरपासेस ओवर. उस वक्त से लाहौर बचाओ तहरीक थी एक, लेड बाय फ्रेंड ऑफ माइन इमरान टवाना, वो कब से शोर मचाए थे, कोर्ट भी गए हैं, नहीं किसी ने सुना. अब हम भुगत रहे हैं जो 10 साल पहले जो गलत डिसीजंस ली थी, और गाड़ियों को इंक्रीज कर, यू नो, लीसिंग, बैंक सबको गाड़ियां दे रहे हैं, यू नो, फॉर वेरी लिटिल कॉस्ट. एंड देन जो साइकिलिंग थी, पहले जब मैं बचपन में थी तो लाहौर में लोग साइकिल इस्तेमाल करते थे, लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू गो ऑन. अब तो आपको एक साइकिल नहीं नजर आएगी लाहौर में.
because there are no pedestrian cycling pathways, pedestrian pathways नहीं है, लोग चलते नहीं है, so इतनी हमने अपने खुद खराबी की है, and it's still not too late to reverse it. When COVID happened, so lots of cities, Milan, Paris, they started pedestrian सारी areas pedestrian बनाने लगे थे, बड़े बड़े boulevards को उन्होंने बंद कर दिए गाड़ियों के लिए. तो यहाँ भी हमारी इस्लामाबाद में CDA के साथ बात हो रही थी, तो हम भी इनको सजेस्ट कर रहे थे कि इस्लामाबाद is one of the areas, cities in Pakistan where you can walk actually because the weather is conducive and greenery. तो हमने ये इनको सजेस्ट किया था कि लोग encourage walking, encourage cycling. आप काफी मार्केट्स को आप पेडेस्ट्रियन कर दें, तो वो तो शौक उन्होंने कहा है, you mean गाड़ियां कहाँ पार्क, गाड़ियां नहीं आएंगी, तो हमने कहा तो और क्या, that is what they said, नहीं जी ये तो नहीं हो सकता, ये हमारे मास्टर प्लान में नहीं है. I mean they're refusing to think along modern, like futuristic lines. वो सोचना ही नहीं चाहते, वो बस उसी पुरानी. तो लोग, I think people's mentality has to change and their thinking has to change, and I think young लोगों में वो एहसास है, but I think people our age and people older are so fixed in their ways and they're like, हाँ जी बस हमारी तो जिंदगी गुजर गई, but it's very selfish. No one's thinking about the young, what kind of world are they going to, it's really scary. I feel so bad for them. कि उनकी क्या जिंदगियां होंगी और क्या उनको तबाही. 1.1 पर look at the heat waves, look at the hurricanes, look at the the sea level rise, look at the glacier जो आप north में जाते हैं, तो आप यकीन करें कि Himalayan mountains और हिंदू कुश काराकोरम mountains में अब कोई गांव नहीं है जहां पर disaster ना हो. कभी floods होते हैं, कभी Glofs होते हैं, Glofs are glacier lake outburst floods, and so they are at the front line. Mountain communities are at the front lines of climate change, and so are our Indus Delta के अगर आप जाकर देखें sea level rise and the destruction of the the communities, the fishermen communities, उनकी बिल्कुल fresh water खत्म हो रहा है और वो डेल्टा के अंदर sea water जाई जा रहा है. So तो वो आप frontline communities हैं, coastal mountain, वहाँ तो शुरू हो गई है तबाही, and they're very worried. और अब शहरों में भी heat waves जब आते हैं, अब कराची में इतने बुरे heat waves आए हैं, and with temperature rise it's going to get worse and worse and worse. So we have to really, and the government is trying. They're trying to adaptation की तरफ जाएं, and but we also ask, we need funding as well. So it's not that easy to switch. अभी भी हमारे electric vehicle की policy was announced by the government, I think last year, 2 years ago now actually. तो उसमें कोई hardly any progress हुआ है, because जो हमारे Toyota and Honda Civic जो conventional जो हैं गाड़ियाँ, वो नहीं करना चाहती. Why should they? It's lots of money, it's profit. They don't want electric vehicles to come. So not to say anything about the big Prados and Surf and heavy duty जो सबसे ज़्यादा damaging है environment के लिए, तो बिल्कुल नहीं चाहते वो. वो कह रहे हैं hybrid की तरफ आप पहले जाएं, and then why not skip straight to electric vehicles, right? And so there's a pushback at every sector, because there's a reluctance to, it's about money at the end of the day. Fossil fuels ka kyun itna, Saudi Arabia is the biggest blocker at every COP, and Nimra can tell you about the role they play, the negative role they play. They don't want this transition to a clean energy future happening, because then Saudi Arabia ka kya banega na? They are a totally oil dependent country. So they go to these negotiations to try and sabotage them actually, and buy time for themselves. Ki theek hai, karna padega, but let's buy 10, 20, let's make it as late as possible, So there's, that, I'm sorry, I'm going on and on, but I'll stop now. मैं यही सोच रही हूँ कि बच्चा मुझे आके, आज मेरा ग्रैंडसन उसके एज के बच्चे अभी 2 साल बाद 4 साल बाद कहेंगे, हमारी चिड़िया, हमारे बादल, हमारे तोते, हमारे दरिया, वो नहर जिसमें हम खेला करते थे बचपन में, जुगनू, ये कहाँ गए? हमारे लिए क्यों नहीं रखे आपने? ये वो सिंपल सवाल है. मैं शर्मिंदा हूँ उस बच्चे से जो मेरी अगली से अगली नस्ल है, कि मैं ना उसको लाहौर की वो हवा दे सकी हूँ, ना लाहौर के वो बाग, ना वो तोते चिड़िया, ना वो खेल कूद. पेंडेमिक में हमें क्लीन एयर कुछ दिन नजर आई. आपकी बात से मुझे ये समझ आया है कि पाकिस्तान दुनिया के माहौलियात को खराब करने में बहुत थोड़ा सा हिस्सा डाला है. हम बड़े चोर नहीं हैं. अब 2 बातें बड़े चोरों के बारे में है. एक सीधी सी बात, चाहे वो हमारे यहाँ वो माफिया है जो दरख्त काटते हुए अपने प्रॉफिट का सोच रहा है कि उन्होंने सिग्नल फ्री क्या बनाना है, और हम बहुत से लोग खड़े होते थे जाके सड़कों पे, अदालतों में जाते थे,
कामिल साहब ने बहुत सी सॉल्यूशंस दी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं वगैरह, नहीं सुन रहे थे। और जो सबसे बड़े दुनिया को खराब करने वाली जो ताकतें हैं, इंडस्ट्रियल मुल्क हैं, यूएसए है एंड अदर इंडस्ट्रियल कंट्रीज, ये अपने लिए किसी और प्लेनेट में घर बना चुके हैं। ये क्या अपने बच्चों पोतों नवासों को लेकर मरीख पे जाके रहेंगे? क्योंकि जब ये डूबेगा, ये फ्लड आएगा, और अमेरिका ने सबसे ज्यादा ऐसी मूवीज बनाई है 2012 और इस तरह, जिसमें दे नो कि या तो वो एलियन की फॉर्म में आएगा या माहौल खत्म होने की। जब वो जाएंगे तो क्या वो कोई शिप बना के खुद तो बच जाते हैं कुछ लोग, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन द रियल लाइफ। सभी डूबेंगे, सभी जगह आगे लगेंगी। 1.1 पे है और आसान मुझे बता रहे हैं कि 1.5 से आप ऊपर गए तो ये ऐसे है जैसे इस कमरे में मैं एक माइक्रोवेव अवन या एक केक बेकिंग वाला अवन लगा दूं और उसकी हीट को 400 पे करती जाऊं। हम सब ने रोस्ट हो जाना है या फ्रीज हो जाना है या बह जाना है। ये बात, ये क्राइसिस, ये इमरजेंसी गवर्नमेंट के लेवल पे समझ आ गई। पाकिस्तान इसमें अच्छे काम करने लग गया है। अगर पहले हमने लाहौर की स्मोक को बहुत खराब भी किया, अब समझ है कि क्या करना है। लेकिन और एक्शन के लेवल पे दो बातें हैं। हमने यंग जो लोग हैं जिनके लिए हमने ये मुल्क, ये घर, ये प्लेनेट छोड़ के जाना है, क्योंकि हम तो फिर किसी अच्छी ठंडी जगह पे होंगे, उम्मीद है। ये तो दाढ़ी वाले आप देख ही रहे होंगे हमारे भाई माशाल्लाह, हम सब अपने हिसाब के बाद किसी ऐसी जगह पे होंगे जहां ये सब मसले नहीं होंगे। लेकिन जिनके लिए छोड़ के जा रहे हैं, उनको ये बताने के लिए कि तुम क्या कर सकते हो, कैसी गाड़ी खरीदो, घर में क्या फ्यूल वो जलाओ, जो भी चीजें क्लाइमेट एक्शंस की हैं वो कुछ हद तक आ गई हैं एनवायरनमेंट की चीजें स्कूल करिकुलम में। लेकिन क्लाइमेट की जो है वो अभी मैंने इतनी ज्यादा नहीं देखी। तो हम कैसे इंगेज करें अपने स्टूडेंट्स को जो हर सब्जेक्ट के हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, वो इंजीनियर्स भी हैं, बिजनेस के बच्चे भी हैं, आर्ट के भी हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल एक्शन के लिए। क्योंकि अब मैं देखती हूँ स्कूलों में ये है तो कोई छोटा बच्चा मुझे कहता है, आई सॉ मैनी स्मॉल चिल्ड्रन, उनको हाथ धुलाने लेके जाओ तो उसने भी मेरे ग्रैंडसन ने मुझे कहा दादी क्लोज द वाटर, मतलब ये कि नलका बंद कर दो। हम इससे पहले की जो एज के बच्चे थे उनको पानी जाया होने का सेंस नहीं होती थी। तो आई वाज वेरी हैप्पी टू नो कि उसने जहाँ से भी सीखा है, स्कूल से। अब ग्रेटा से भी छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे तो शायद लोगों को शर्म आए। 5 साल के निकलेंगे और कहेंगे पानी मेरा, दरिया मेरा, मेरे लिए आप क्या करके जा रहे हैं, मेरे बादल खत्म, मेरे ग्लेशियर। तो हम अपने स्टूडेंट्स को जो कि यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस के हैं, एनवायरमेंट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन के लिए, क्योंकि एनवायरमेंट में बहुत और चीजें कुछ ना कुछ उनकी समझ आने लग गई हैं, क्या बताएंगे। क्योंकि तो बच्चे फैमिली से हमसायगी, नेबरहुड से सोसाइटी, सोसाइटी से नेशनल लेवल और नेशनल से डिफरेंट कंट्रीज। तो जब सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएं तो फिर तो वो, इसका मतलब है कि क्राइसिस वाकई सीवियर है। तो ये 1.1 से 1.5 तक पहुंचने से बचाने के लिए, और इसके अलावा निम्रा आपका कोई सवाल हो जो कुछ मैंने कहा है, इससे पहले आपके सवाल थे, हम टीचर्स क्या करें, इसका कुछ सिलेबस बस में एक मेरा सवाल होगा दोनों पैनलिस्ट से, इफ यू लाइक टू ऐड, क्योंकि मैडम बात कर रही थी। तो क्लाइमेट एक्शन जो है, आपको अगर पता हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट करती है कि एसडीजीज में क्लाइमेट एक्शन का गोल पाकिस्तान ने अचीव कर लिया 10 इयर्स अहेड। 2020 में 2030 वाला जो गोल था, क्लाइमेट एक्शन जो स्पेशली गोल है, वो हमने अचीव कर लिया है। एक तरफ तुम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान हैव अचीव्ड द गोल, दैट इज वेरी फाइन, लेकिन फिर जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि हमारे पास अभी स्मोग है, ठीक है, हमारे पास कराची में हीट वेव भी आती है, हमारे पास फ्लड्स आते हैं, अभी इस्लामाबाद में जो रेन हुई है, बारिश या रेन बॉम्ब जिसे हम कह सकते हैं, टेक्निकल टर्म्स में यूज कर रहा हूँ, रेन बॉम्ब और हीट वेव। तो हम एक तरफ तो खुश हैं एज अ गवर्नमेंट लेवल के हमने अचीव कर लिया एसडीजी क्लाइमेट एक्शन, और पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट भी कर रही है। आप दोनों से मेरा सवाल है कि आप लोग दोनों कैसे देखते हैं इसको कि हमने जो 10 बिलियन सुनामी गवर्नमेंट कर रही है, मेरा ख्याल है, मैं कह रहा हूँ 10 बिलियन ना भी होने, 1 बिलियन भी हो, 1 बिलियन भी नहीं, 1 मिलियन भी लग जाए ट्रीज हमारे एनवायरमेंट को साफ करेंगे, वो रोल प्ले करेंगे, बट द गोल इज स्टिल वेरी फार फ्रॉम अचीविंग। सो हाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट दे हैव अचीव्ड, एंड
if we claim कि हमने अचीव कर लिया तो फिर ये मसाइल हमारे सामने क्या आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, इसमें आप लोग दोनों पैनलिस्ट क्या देना चाहते हैं young people, young students को कि what should they be doing? So anyone can go first, Nimra or Reena or whosoever wants to go. Government wala, so I think Reena can address that probably, right? Yeah, so you एक तो हमारे फेडरल लेवल पर जो डिसीजंस होते हैं या काम होता है, और एक बिकॉज 18th अमेंडमेंट के बाद पावर हैज बीन डिवॉल्व्ड टू द प्रोविंसेस, तो एक प्रोविंशियल लेवल का भी होता है काम. सो आई थिंक फेडरल लेवल पर जो गवर्नमेंट क्लेम करती है, विच इज वेरी करेक्ट, उन्होंने अपनी एनडीसी जो नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस, एक होमवर्क होता है हर मुल्क के लिए कि वो उन्होंने अपने प्लान्स शेयर करने हैं ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, तो वो तो बहुत क्लियरली गवर्नमेंट ने अपने इस साल जो सबमिट किए हैं ग्लासगो जाने से पहले कि ये हमने अचीव किया, ये हमारे प्लान्स है. और उनके 10 बिलियन ट्री के अलावा उन्होंने कहा है कि हमारा क्लाइमेट विजन यही है कि हमने 60% अपनी एनर्जी मिक्स क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है बाय 2030, which is a good claim, and 30% of the transportation hogi electric vehicles ki by 2030. And hum nature based solutions jo Malik Amin hamare special assistant to the prime minister on climate change, वो ये उनका emphasis है on ecosystem restoration, nature based solutions and protected areas, meaning कि आप national parks और declare करें. Pakistan actually has a large number of national parks, और Prime Minister Imran Khan की vision में वो it's called Protected Areas Initiative, 15 और वो main जो model वो बनाना चाहते हैं national parks, in addition to the ones that are existing. And then उनको आपने proper management भी करना है, आपने protect करना है from tree cutting, from encroachments. I mean, like we have a huge problem. We have this Margala Hills National Park in Islamabad, but we have encroachments galore. Institutional, commercial, residential encroachments. वो actually पहाड़ों को खाई जा रहे हैं. तो अभी court case हो रहा है. So there is a pushback, and at the federal level, you are doing this. You are announcing these plans, and but then you have at the provincial level the actual implementation. ठीक है, तो आपने plan तो आपने announce कर लिया है, and yes, you've met the UN goals, but then on the ground, you see the reality of a city like Lahore. And that, unfortunately, the federal government cannot impose on. It's the Punjab government's, prerogative, and they have to now really try to tackle this situation. And it calls, मेरे तो ख्याल में it calls for drastic measures. कि आप actually announce करें days where you just stop. I mean, COVID में तो आपने कर लिया था. You had a lockdown. You stopped the cars from coming on the roads, right? And so people are actually inhaling poison in Lahore. तो वो एक recognition भी होनी चाहिए पंजाब गवर्नमेंट के लिए कि this is a climate emergency. I mean, climate कह रही हूँ, smog emergency. एक recognition तो पहले करें ना कि this is beyond इतने levels of आपकी जो है AQI indicators जो आपके हैं. There was some issue of not recognizing the pollution levels that were given out by the private monitors, and then खैर वो तो subject aside है. एक तो आप come on the same page कि do you agree कि this is like 300, 400 is a hazardous level, and when it is hazardous, shut down the city, tell the children not to go to school, tell people not to go on the road unless they're wearing a very heavy mask that can sort of block out the pollution. 2.5 जो कहते हैं particulate matter है, वो पहले recognition हो, फिर आप really drastic measures करें, and people have done it all over. I mean, I remember Beijing used to be one of the most polluted cities in the world, and they moved out all the coal power plants from inside Beijing, all the other polluting industries से उनको उन्होंने बाहर फेंक दिया शहर से, and they गाड़ियों को they brought hybrid cars, electric vehicles, and now Shanghai, Beijing is one of the cleaner cities now. So there are measures you can take, but पहले आपको willingness भी नजर आए ना government की, which is unfortunately the federal cannot impose. It's the Punjab government. It's like the Lahore city की जो government है, local government, I don't know अगर अभी आजकल क्या status है, but really it has to come from the grassroots level. Really, I mean, at the local level, at the ground level, you have to शोर मचाएं. हम भी इस्लामाबाद में शोर मचा रहे हैं कि we have to save the Margala Hills. Otherwise, Islamabad road, there was a proposed road called the Margala Highway. They wanted to build right next to the. तो हमने इतना शोर मचाया. We've gone to court. We're fighting whatever you can. So I would say कि everyone take a stand for the neighborhood, for their. I mean,
stop living in your silos in your home. आप neighborhood के लिए करें, अगर आपका neighborhood park है उसको बचाएं, उसका ख्याल रखें, उसका recycling, reuse, अपना you know, it's not that difficult. अपने जो आपका जो organic waste है उसको you can do it yourself. You can make compost, you know, if you have a little small garden or a patch or a lawn or even a joint. अगर आप मोहल्ले में रहते हैं तो even मोहल्ले का भी थोड़ा सा छोटा सा तो green area होगा ना. So I mean it's all about like educating, informing, getting together, realizing that it's your way of life that has to change, and then our consumption type lifestyles. I mean, why do we really need to buy so many clothes? Do we really need to buy so many, you know, things to use? Like you have to really think twice. And I think COVID was a good practice because we were sitting at home, we were not shopping, we were just thinking about our health. So, I mean, I've stopped now. Aside from food, I really don't buy that many things anymore because I'm like, do I really need this? I mean, can't I reuse the same clothes I wore last year? I mean, you don't grow out of them at this age, right? So, I mean, so it's also our own lifestyle and our way we live, and to start thinking more about the planet, and the garbage you know, the plastics use. And I know in Islamabad, we try to ban plastic bags, or फिर वापस आ जाते हैं, फिर ban होता है, और फिर उसकी काफी monitoring होती है. We have cloth bags, you know, when you go to the bazaar, take your own cloth bag. Try not to accept bags when the shopkeeper gives you. And so many things you can do. I mean, if you become just a little bit more conscientious, a little bit, you know, start thinking about, let the change come from within me. I mean, I can't change the entire planet immediately, but I can at least change my own behavior and the behavior around. Like I told my cousins that, you know, they said, you know, lawn ka season, just a little example. And they were so horrified. So I said, I don't believe in buying clothes. And they said, what? And they said, "Kya tum kapde nahi logi?" Maine kaha, no. So now I get gifts, by the way, from my cousins. I mean, they give me the like the not. I mean, when they get bored of their clothes. But it's a simple thing. But they were so shocked when I actually said that. Yeah, why do you need to? Aapko zaruri hai ki naya lawn aaye? Of course, these are privileged people who can afford the naya lawn. But still, I mean, wo bhi thinking ho na. Do you really need to buy all this every you know? कि अब गर्मी आ रही है, नया lawn है, अब सर्दियाँ आ रही है. Use your old clothes. What's wrong with your old clothes? You know, and then. It's just a matter of you know, and I think younger people are doing that. मैंने देखा younger people are much more I think awake. They are much more they realize what's at stake here, and I think they're so different. I don't know, what do you call them, Nimra, now? Not the millennials, what do you call the younger generation now? The Gen Z. So yeah, so maybe you can tell us about Gen Z. They were like 93 onwards, or Yeah, so, I think it's Nimra, you can better Gen Z 90s के बाद है ना, 93 के बाद है. मेरे ख्याल से 93 है या 92 इस तरह है. एक और उनसे भी यंगर जनरेशन है जो टीनेजर्स हैं या अब यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं, वो भी है. So Nimra, anything on policy and पाकिस्तानी हैं आपने पाकिस्तान सस्टेनेबिलिटी को बहुत 10 साल पहले उसमें लीडरशिप के लिए बच्चों के पास आप जाते थे, मुझे याद है, आप भी और आपकी सारी टीम भी. तो पॉलिसी के लिए भी, और हम पौधा लगाना, गमला, कूड़ा फेंकना, पानी बचाना, वो तो है. क्लाइमेट के हवाले से भी बच्चों को और पॉलिसी के हवाले से भी इंगेज करने के लिए कोई एक्शंस. क्या मैसेज है? But as a youngster, you yourself a youngster, so what is your message to the young people, young students, जो आजकल के या जो नए बच्चे जो बनना चाहते हैं climate activists, the one who are interested to pursue study environment, so what's your message to them? I think just say as Raya has mentioned, आगाही बहुत important है, और आपके जो local issues होते हैं वो उनसे involvement रखना. जैसे लाहौर बचाओ, जब लाहौर में थे तो इन issues के साथ involvement रही, और उसमें बहुत ज़्यादा एक youth participation आई. young स्कूलों के बच्चे आते थे कोर्ट में अपनी testimonies देने उस केस में जो लाहौर बचाओ का हुआ था. उन्होंने 200 स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान सस्टेनेबिलिटी नेटवर्क के साथ जो एसोसिएटेड थे, जो कम्युनिटीज़ में वो बच्चे थे, उन सब ने लेटर लिखा, वो हमने फिर उस केस में सबमिट कराया. तो जैसे as has been mentioned, I think ये जो जनरेशन है, they are already aware क्योंकि I think इंटरनेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आई है. लोग इसके अलावा लोगों का इकट्ठा होना आसान हो गया है.
अगर कोई लोकल इशू हो तो लोग आराम से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं. सो आई थिंक क्लाइमेट एक इंटरनेशनल सा इशू लगता है, मगर उसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ही ग्रास रूट्स लोकल लेवल पे ये एक्शन लेने पड़ेंगे. और अभी इस वक्त इवन जो गवर्नमेंट सबसे प्रोग्रेसिव हैं, सबसे ज्यादा एक्शन ले रही हैं, वो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, सिटी गवर्नमेंट्स हैं पूरी दुनिया में. वो बल्कि जो प्रोविंशियल या रीजनल या नेशनल गवर्नमेंट्स या इवन यूएन से ज्यादा, दे हैव बीन मोर इफेक्टिव. बिकॉज जब कोई चीज आपको डायरेक्टली आपकी जिंदगी पे असर होता है तो लोग ज्यादा, रिसर्च ने भी यही साबित किया, तो लोग ज्यादा उस चीज में एंगेज होते हैं. हमें अगर लगे कि हमारे मोहल्ले में कुछ हो रहा है, हमारे बच्चों की सेहत पे किसी चीज का असर हो रहा है, तो वो साइकोलॉजिकली वो उस चीज में हम ज्यादा एंगेज होंगे. सो आई डेफिनेटली बिलीव दैट यूनिवर्सिटीज particularly need to make it very easy for non-environmental science or sustainability related subject students who are not studying specifically environment, to make it very easy for them to learn about these issues, to encourage environmental clubs. When I was a kid, environment clubs और ये सारी चीजें जो हमारे स्कूलों में होती थी, they played a really big role. बच्चों से young age में दरख्त लगाना, जो cultivating a love for nature, कि local plants कौन से हैं, ये सारी चीजें. क्योंकि बच्चों में एक नेचुरल, क्योंकि अभी माशरे से उस तरह ब्रेन वॉश नहीं हुए होते, सो उनमें एक नेचुरल एक अप्रिसिएशन होती है नेचर की. ये रिसर्च से साबित हुआ है, मल्टीपल रिसर्च इन एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, neuroscience has proven that children who are exposed to nature tend to be more sociable, they're more peaceful and all of those things. So there are many other benefits as well. So I think in me, if I look at myself, I think it was my parents who took me into nature, took me hiking, did those things, cultivated just this mindfulness. So अगर बहुत young बच्चों की बात हो रही है तो इन छोटी चीजों से काफी फर्क पड़ता है. But I think for university students, what universities can do is just create an environment where they can create environmental clubs and take action. Maybe they can give credit to students, university credit for climate and environment related activities, connect them with local policymakers. अब जैसे हम लाहौर बचाओ movement की बात कर रहे थे, and as Ryan has mentioned, in Islamabad, she's leading these movements around Margala Hills and things like that. So I think that's that local action, grassroots action is very important. Do we have time? Yeah, are we out of time? हम लाइव हैं और यहाँ बैठे भी हैं तो okay. Okay. मुझे याद आ रहा है, मुझे एकदम आपकी बात से याद आया कि बिल्कुल जब कोविड में ना सब कुछ बंद था, तो मुझे याद है कि डॉक्टर नुमाना के साथ हमने प्लान बनाया. मैं और डॉक्टर नुमाना हम स्पेशल पंजाब यूनिवर्सिटी आए और हम बोटेनिकल गार्डन में वी हैड अ वॉक and we really enjoyed the nature because it was very clean, or we could hear birds moving around, and it was very beautiful experience. Because smog की वजह से, कोविड की वजह से ट्रैफिक सब बंद थी, तो लाहौर में बहुत ज़्यादा लाहौर साफ सुथरा हो गया था, और it was a very nice evening. It was a very nice time to explore nature, और birds को हम देख रहे थे, और sky was very clear, clouds could easily be seen. तो बड़ा मजेदार. It was a very, और especially रात को मैं I sometimes observe the moon, तो it was a very clear sighting of the moon as well. और बड़ा मैं शेयर कर रहा था इसको कि बहुत अच्छा टाइम है, and we are seeing a very clean and fresh environment, enjoying the perks of that time. So yes, absolutely, nature से जितना करीब होंगे तो वो उनकी well-being के लिए भी बहुत important है. And you are absolutely right कि हमें हमेशा environment में बात करते हैं, healthy minds, healthy environment, healthy minds. So we always say this, that whenever the environment is healthy, the thinking process, the healthy minds are there, and the students are more healthy, and they can easily perform well in the academy. मैं इसको ऐड करूंगी कि एक्चुअली वेलबीइंग, फिजिकल भी, हेल्थ भी, एंजाइटी लेवल्स जो स्ट्रेस के बच्चों में है ना, रेस्टलेस होते हैं बच्चों से, मेरी मुराद है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उनकी लिसनिंग पावर कम है, बात कर रहे होते हैं तो उनके अंदर ना एक रेस्टलेसनेस होती है, खत्म करो, हम आगे कुछ करें, हम स्क्रीन पे जाएं. तो उसके लिए मुझे लगा कि जब भी मैं उन्हें एक्सपोज करती हूँ, जैसे अब हम उन्हें
बोटेनिकल गार्डन जो माल रोड पे है वहां लेके जाएंगे, और उसके ये जू लेके जाएंगे। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्हें वॉक कराऊंगी। जब वो वहां की एयर सांस लेते हैं तो वो कहते हैं यहाँ की हवा में क्या है, यहाँ की हवा में सिर्फ ये है कि टेम्परेचर अंदर घुसते ही इन ग्रीन पॉकेट्स जो लाहौर में कुछ है, शुक्र है, वो कम होता है और हवा साफ होती है। तो वो बच्चे भी फौरन नोटिस करते हैं, बड़े भी नोटिस करते हैं। ये छोटे छोटे एक्शंस हैं जो नूर यूनिवर्सिटी में हम लोग कर रहे हैं इकोलॉजी के हवाले से। आप कुछ हमें मजीद बताना चाह रहे थे और इसलिए आपने पूछा था कि टाइम है। सो अपनी जमीन के लिए और इस टॉपिक के लिए हमेशा टाइम होता है। बिल्कुल, ये तो काफी बड़ा टॉपिक है, and I'm glad that we were able to have this discussion. But I just wanted, Raina, to give her a chance if she wanted to just say a few words on COP26, since we have her, and how her experience was, or इस दफा कौन-कौन से issues आपको prominent लगे, और आगे आपको क्या उनकी डेवलपमेंट लगती है? If you could give us say a few words about that. पाकिस्तान से COP26 में कौन था, कि मुझे COP21 में तो पता है कौन था और वो कुछ कह सके थे कि नहीं, लेकिन COP26 में कैसे हम लोग पाकिस्तान के लोग हैं? जी तो COP26 की छोटी डेलीगेशन गई थी पाकिस्तान से. इट वाज हेडेड बाय मलिक अमीन असलम एंड जरताज गुल जो हमारी एनवायरनमेंट की मिनिस्टर है, आई मीन क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर फॉर स्टेट, वो भी साथ गई थी, बट फॉर द फर्स्ट 3 days ओनली. इट्स अ 2 weeks लॉन्ग प्रोसेस, कॉन्फ्रेंस होती है. और अनफॉर्चुनेटली जो पहले 3 दिन में प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सके, दैट वाज कॉल्ड द वर्ल्ड लीडर्स समिट. सो दे बोरिस जॉनसन ने ऐसा प्लान किया था, बिकॉज इट वाज यूनाइटेड किंगडम वाज द होस्ट, but it was held in Glasgow. So Scotland में it was held, but the host was the United Kingdom. तो उन्होंने जैसा प्लान किया था, पहले 3 दिन का उन्होंने वर्ल्ड लीडर समिट का रखा था. तो वहाँ पर चाइनीज प्रेसिडेंट couldn't come, and Russian भी he didn't come either, Putin didn't come either. So 2 बड़े जो हमारे polluters जो हम कहते हैं बड़े too big emitting countries नहीं आ सके for various reasons, I don't know. I think the Chinese are just not traveling during the pandemic. और ये थोड़ा सा strange COP था in the sense कि बड़ा मुश्किल COP था वहाँ पहुँचना. Hotels were very expensive. You had to be vaccinated, not vaccinated. Then they made a special thing to recognize Sinopharm and the other Chinese vaccines, because otherwise half the delegates couldn't come, because Africa, Pakistan and a lot of countries में तो Chinese ही मिल रही हैं, and they were first only recognizing. Anyway, फिर वो उन्होंने वो भी streamline कर लिया. और वहाँ पहुँचते भी वहाँ पर बहुत बारिशें हो रही थी, so the trains were disrupted. तो वहाँ भी क्लाइमेट चेंज का असरात हो रहे थे, तो बड़ा मुश्किल से लोग जब पहुंचे भी, तो इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग कि वहाँ ऑर्गेनाइजेशन काफी खराब थी, बहुत लंबी लंबी लाइंस टू गेट इन. आई डोंट नो व्हाट, maybe they didn't expect so many people to actually show up, because the difficulty in traveling, and then the COVID test. Every day we had to take a COVID test. They're called lateral tests. वो home kits होती हैं. We had to test ourselves. जब negative result आए उसको post करते थे online. फिर then we could go to the otherwise you could not enter the premises. और उधर भी unfortunately बहुत places were online only. So लोग बड़ा ये भी कहते कि हम पहुंच भी गए, but we can't even get into a lot of the events because of COVID restrictions. वो बस थोड़े से चंद लोगों को शुरू में लेकर फिर वो लाइन को बंद कर देते थे, because you had to seat. उन्होंने सीटिंग जरा थोड़ी दूर दूर रखी हुई थी, और फिर मास्क भी, वी हैड टू वेयर द मास्क. एंड तो थोड़ा सा आई थिंक पेंडेमिक की वजह से जरा स्ट्रेंज कॉप था. और अभी तक पेंडेमिक इज ऑन गोइंग इन इंग्लैंड. आई मीन नंबर्स उनके काफी हाई हैं, सो इट्स नॉट लाइक हमारे नंबर्स हैव ड्रॉप्ड क्वाइट अ बिट. सो वो भी एक चैलेंज था. And then a lot of NGOs felt it was very exclusionary because of the high prices and the vaccines. A lot of their members couldn't come, so there was a lot of noise about the fact that it was exclusionary. It was not an inclusive COP. So वो था. और हमारी delegation, there were about 8 members, official party delegation जो हम कहते हैं. And so a lot of side events. Pakistan had a Pakistan pavilion in the big, एक ही बड़ा हॉल था जहाँ पर सारे pavilions थे, और वहाँ पर ज़्यादा events हो रहे थे. So वहाँ पर Pakistan contributed, I mean in the way that we had a lot of side events. There was lots of bilateral meetings. World Bank के साथ हुआ हमारा
2-3 हमने अपनी 10 billion tree tsunami को highlight किया, then we highlighted Indus recharge का एक program शुरू हो रहा है उसको highlight किया, फिर even brick kilns का था, छोटे-छोटे projects भी थे that we're converting brick kilns to zigzag technology which is less polluting, तो उसका भी उन्होंने एक छोटा सा event किया. So there were lots and lots of events that the Pakistan Pavilion did to highlight what the Ministry of Climate Change, because Ministry of Climate Change and Ministry of Foreign Affairs के लड़के were basically, and there were a few women there as well, of course. And so to highlight the kind of like activities that Pakistan has taken, interventions, I should say. So वो अच्छा जा रहा था, but negotiations are very complex. They're very difficult. They take place behind closed doors. I do not have access because I'm on a media badge. और वहाँ पर बहुत disappointing results आए थे, because एक तो I think the UK government really wanted a strong statement on coal. They wanted a clear signal to the world that coal is finished now. Okay, we have to finish off coal. Not, immediately, but that तो वो फिर words का थोड़ा था, because they wanted a phase out. तो उन्होंने फिर Indians ने शोर मचाया because Indian economy is highly dependent on coal. So they changed the word to phase down. So वो थोड़ा disappointing था, because that's a low hanging fruit. It's a very, very dirty fossil fuel. तो वो चाहते थे कि वो उसको खत्म एक सिग्नल मिले, but still the British said कि नहीं, चलो word तो आ गया ना कोल का कि phase down or phase out or whatever. Phase down तो हो गया. So they were, either the glass is half full or half empty. So their perspective was that कि नहीं, at least we got that out of the, and it's a consensual process. So that means अगर तकरीबन 200 countries के delegations हैं, so all 200 countries have to agree. So that's why it's a very difficult and painstaking and लंबा pressure होता है, फिर side meetings होती हैं, फिर एक, वहाँ पर जो, I think some countries like Barbados, like Bangladesh, they have excellent negotiators. Pakistan का इतना negotiation नहीं रहा, because, we should actually get better negotiators involved. And some small countries like Bhutan actually hire professional negotiators and they put them on their delegation to represent their interests. So ये भी लोग करते हैं. And Bangladesh has an excellent, like उनका कोई, I think they have almost 200 people on their team, and they are very active, very concerned, and it's good because the global south our interests are protected because of these, few delegations that are really clued in from the global south. Because the global north se aate hain, they come with, like, American delegation comes with, like, I think 200 lawyers. They're all lawyers and they go over every single word that's in the text. And they say, ye lafz nahi say, ye lafz. They protect their own interests, So there is a, obviously the global north and the global south and developing countries versus rich countries, Annex 1 countries, we call them. Everybody wants what's best for them. So it is, in a way, the process is flawed, because it's everyone, like, they're all negotiating to get the best thing for themselves, but then yet it's the only, like my mentor told me once, it's the only game in town. What's the alternative? You don't have an alternative to the UNFCCC process, right? And ये आप देखें कि जो भी है, it's incremental, it's slow, it's painful, but if you add up all the commitments that countries have given through the NDCs, which is their voluntary commitments, right? So it comes to about 2.5 degrees of warming. So agar wo na hota process, so we would be heading towards 4, 5, 6 degrees of warming. So we have bent the curve somewhat. It's not good enough. We want 1.5. सबका जो हमने voluntary commitments को add करे, तो we come to 2.5. So there is still a gap of a huge gap, but at least we are bending the curve somewhat. So yeah, the only, that's the hopeful part about it. Of course, जो criticism होती है, और जो activists on the roads or who were marching were saying it's not good enough. इतनी ज़्यादा emergency है. Countries should have been, much more, like, especially rich countries, because they can afford the transition. आपने देखा pandemic में, and the Prime Minister of Barbados pointed this out, कि जब pandemic hit किया, तो उन्होंने तो trillions of dollars spend किए to, make sure that their economies, when they shut down their economies, then they made sure that लोगों को पैसे मिले, उनको. In fact, Canada, I think, Nimra, am I right? Canada was giving out like
$1,200 to its citizens every month, right? बिल्कुल, You 2000, बिल्कुल, just to stay at home, बिल्कुल. just to stay at home and do nothing. So they said, okay, COVID, because it's a health issue, but a climate isn't that a health issue too? I mean, when hurricanes hit you, when you heat waves hit you, of course it's going to affect your health, right? तो फिर उन्होंने ये कहा बारबेडोस के प्राइम मिनिस्टर ने कि आप लोग ने मिलियंस ट्रिलियंस खर्च लिए अपने लोगों को बचाने के लिए थ्रू कोविड, but you can't spend it to give a little bit of money. We're not even asking for trillions. हम कह रहे हैं हमें थोड़े से ही दे दें, 100 billion ही दे दें per year, वो भी नहीं मिल रहा हमें. Meaning the global south and the developing countries. So, so it is very like hypocritical in a way that they do have the money, their banks and their financial systems have the liquidity, they have the money, but then they don't want to give it to the developing countries because, they say, oh, we don't have the money and just use our regular aid. And, so wo bhi issue tha because they promised us I was there in Copenhagen in 2009 when, Secretary of State was Hillary Clinton, and she promised, I was in the room and she said, we will give you, we meaning the global north will give the global south $100 billion a year in the Green Climate Fund, for adaptation purposes or for mitigating the impact of climate. And wo abhi tak nahi hua. It's come to about 80 billion, but it hasn't touched. So uska bhi they wanted a revision. And ab to aapko pata hai kitne damages and so much. Then the loss and damage. Bangladesh was, one of the countries that was really saying that we want a facility, a loss and damage facility up and running, and uske kuch shape hona chahiye, koi form, kuch announcement honi chahiye. And unfortunately, and I think Scotland gave some £2 million as a gesture ke isko shuru kare, that the rich countries should pay the poor countries for damages caused by hurricanes and floods. And because like countries like the Philippines that are constantly hammered by hurricanes, they're like, how do we, like ek hurricane jata hai tabahi hoti hai, phir hum kis tarah, how do we like start reconstruction, and we don't have insurance. How can insurance cover this? And then ek aur hurricane aata hai. Sometimes you have 2-3 hurricanes in one season. So they're like, we need help, so to just get back on our feet. So wo bhi nahi hua, uska thoda sa humne kaha, we'll talk about it, but next year, a lot of decisions have been pushed down to next year. Next year, the COP will be in Egypt, in the global south, in Sharm el-Sheikh, and there's hope that because wo south mein hoga, तो बहुत ज़्यादा pressure पड़ेगा इन मुल्कों पर, rich countries पर, कि भी अपने हाथ खोलो, पैसे दो, help the transition. Even for us, we're also asking for money. We're like, okay, we will cut even more emissions, but then give us money to transition, right? Because it's easy to talk about solar energy and clean energy and all the other things, but then to actually do the transition, it's going to cost us money, right? So we would like that money. And then there's also transfer of technology, and then they have a problem with even transferring technology to the global south. So that's also an issue. So there's so many issues, and adaptation ke liye, they want a separate fund now. So uska bhi, they want, basically it's money, right? You have to give money, and so wo ab us par wo thoda sa, obviously, why should rich countries give poor countries money, right? डूबेंगे तो सब कच्चे डूबेंगे, पत्थर उन्होंने डाला किश्ती में, सुराख उन्होंने किया, लेकिन डूबेंगे सारे. तो शायद इसको वो समझ लें. Thank you so much, Nimra, because Canada refused, now one of the countries that opposed the loss and damage facility. And then just after the COP, there were huge floods in Canada. Unke apne log were like, and now they're paying loss and damage to their own people. And the Bangladeshi negotiator Salimul Haq pointed that out, that you didn't want to give it to us, meaning poor countries. Aapke apne mulk mein wo itna terrifying floods aaye hain ki suna ki pure ghar mudslides the. I don't know what happened, but whole houses, whole neighborhoods were swept away. So this argument that rich countries are not going to be affected, and even that's not true anymore, actually. बिल्कुल नहीं. कैलिफोर्निया में पानी के लेवल नीचे और जंगलों में आग जो बुझ नहीं रही, तो इतनी हमने एक पिक्चर बना दी है कि उम्मीद है कि इसकी इमरजेंसी को समझा जाएगा. और एक ये जो हमें बड़ी दूर लगता है कि शायद ये कोई कॉज इतना करीब नहीं है, अर्जेंट मीडिया में जो इश्यूज आ रहे होते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो उम्मीद है कि हमारे इसकी अवेयरनेस का वो मकसद पूरा हुआ होगा.
you've taken a lot of your time and we're very thankful कि आज ये dialogue हमने start किया है, हम इसको continue करेंगे, जो पाकिस्तान में sustainability की leadership बड़े कर रहे हैं, young लोग कर रहे हैं, खास तौर पे young लोग कर रहे हैं, और आगे इसके actions के बारे में करेंगे, ecology के हवाले से भी, क्योंकि subject चल रहा है, and we will be getting back to you with more questions and maybe request for actually talking to our students, क्योंकि ये तो एक live चीज हमारी हो रही होती है हर हफ्ते, but giving them for example, मैं एक बच्चे को ही कैसे समझाऊंगी कि आप के पहले ये हुआ था, दरख्त करते हैं तो फिर डायरेक्टली उसकी वजह से गर्मी क्यों हो जाती है, ये साइंस के सब स्टूडेंट्स को और आर्ट्स के सब स्टूडेंट्स को ये लिंक समझाना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत ममनून हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे सिटीजन्स ने, और मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के बुजुर्ग भी वॉच कर रहे हैं। निम्रा के एक बुजुर्ग तो मुझे इसमें नजर आए हैं। आई थिंक हमें अक्रॉस द सोसाइटी इसकी बहुत बहुत जरूरत थी। आप दोनों की थैंक यू करते हुए, और सूरज निकल आया होगा आपकी एडवांस इंडस्ट्रियल सिटी में तो इसके साथ आज के लिए खुदा हाफिज, एंड होपिंग दैट वी विल बी सिटीजन्स who will see some change in our lifetime. Thank you so much, and thank you so much, Reena. Thank you so much.